Hello, viewers. Today we are going to discuss about transposition of a prescription. So let's go and move on and see के transposition क्या होती है, ठीक है? तो टेबल ऑफ कंटेंट है हमारे पास, डेफिनेशन देखेंगे हम, सिंपल ट्रांसपोजिशन क्या होती है, उसके स्टेप्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल और एक केस हम डिस्कस करेंगे और उसकी इंपॉर्टेंस, ठीक है? ट्रांसपोजिशन को सबसे पहले समझने के हमें पावर क्रॉस का पता होना चाहिए। तो अभी हम दो मेरिडियंस ले लिए हैं, एक 180 है और एक हमारे पास 90 डिग्री है। और 90 पे ये जो हमारे पास जहां पावर लिखी हुई है वो हमारे पास है एक्सिस मेरिडियन, यानी अगर ये -3 है इसकी पावर 180 पे होगी लेकिन एक्सिस इसका 90 पे है, ठीक है? और अगर ये 180 है, ये -2 जो है इसका ये एक्सिस मेरिडियन है 180, ठीक है? लेकिन जो इसकी पावर होगी वो किस एक्सिस पे होगी? 90 डिग्री पे, ठीक है? तो अब हम देख लेते हैं कि पावर क्रॉस में हमें क्या पता लग रहा है। अब जो पावर क्रॉस है इसमें से हमें दो प्रिस्क्रिप्शंस पता लग रही हैं। फॉर एग्जांपल, पहली अगर मैं प्रिस्क्रिप्शन देखूं यहाँ पे तो -2 है और यहाँ -3 है। मैं ऐसा क्या ऐड या माइनस करूंगी कि मेरे पास ये वाली मतलब -3 आ जाए? तो इट्स लाइक कि अगर मैं यहाँ देख लेती हूँ कि हम किस तरह से करेंगे। ये मेरे पास मैंने पहली प्रिस्क्रिप्शन किस तरह से निकाली, हमारे पास -2 है, ये हमारे पास एक -2 है जो कि एक्सिस मेरिडियन है 180 डिग्री। तो मैंने इसको ले लिया स्फेयर, और अगर मैंने इसको स्फेयर ले लिया तो ये मेरे पास आ गया -2, और एक्सिस हमेशा हम स्फेरिकल वैल्यू की लिखते हैं। तो ये हमारे पास एक्सिस मेरिडियन -2 का है 180। अब मैं ऐसे कौन सी वैल्यू को ऐड या प्लस माइनस करूंगी या ऐड करूंगी कि मेरे पास -3 बन जाए? तो मुझे पता लग गया, पावर क्रॉस डिस्कस कर रही हूँ ये मैं, के -2 -1 मेरे पास बन जाएगा -3। तो मेरे पास ये एक प्रिस्क्रिप्शन आ गई। अब अगर मुझे दूसरी प्रिस्क्रिप्शन फाइंड करनी है तो मैं अगर इसको अब स्फेयर ले लेती हूँ, -3 को ले लूंगी, तो इसका एक्सिस मेरिडियन मेरे पास है 90 डिग्री। मैंने इसको स्फेयर ले लिया, ये स्फेयर आ गया और ये मेरे पास उसका एक्सिस मेरिडियन आ गया। तो मैं ऐसी कौन सी वैल्यू को ऐड या माइनस करूंगी कि मेरे पास आ जाए -1, दोबारा आ जाए, सॉरी -2 आ जाए, ठीक है? तो इसमें हम -3 को मैं ऐड कर दूं अगर +1 के साथ, ठीक है? तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इससे मुझे क्या मिल जाएगा? -2 मिल जाएगा। तो मेरे पास दूसरी प्रिस्क्रिप्शन ऐसे हो जाएगी -3 + 1 × 90 डिग्री। नाउ they say that this prescriptions can be also derived through the transposition if one of the either prescription is given instead of a power cross, बिकॉज पावर क्रॉस से हम कुछ एरर्स वगैरह किसी को नहीं समझ, अगर पावर क्रॉस से हम किस तरह से प्रिस्क्रिप्शन निकालते हैं तो उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, गलती हो सकती है। इसीलिए हम ट्रांसपोजिशन के मेथड से दोनों की दोनों प्रिस्क्रिप्शंस, अगर हमें कोई एक भी गिवन है, फॉर एग्जांपल अगर ये भी गिवन है, तो मैं ये दूसरी प्रिस्क्रिप्शन जो है ये ढूंढ सकती हूँ अगर मेरे पास पहली प्रिस्क्रिप्शन है। तो बजाय इसके कि हम इस पावर क्रॉस से दो प्रिस्क्रिप्शन निकालें, अगर हमें कोई एक भी पता है तो हम ट्रांसपोजिशन के फिनोमेना से दूसरी फाइंड कर सकते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं कि बेसिकली ट्रांसपोजिशन क्या है। इट इज अ कन्वर्जन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन विद सिलेंड्रिकल टू एन ऑप्टिकल with cylinder to an optically equivalent form by keeping the meridian same। इसमें हमारे पास क्या है, मेरिडियन सेम होता है लेकिन हम सिर्फ सिलेंडर को उसके ऑप्टिकली इक्विवेलेंट में चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक प्रिस्क्रिप्शन है, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया किसी और फॉर्म में, लेकिन वो उसकी इक्वल ऑप्टिकली इक्विवेलेंट फॉर्म ही है। यानी अगर मैं पिछली एग्जाम्पल में जाऊं
तो ये दो जो मेरे पास प्रिस्क्रिप्शंस हैं, फॉर एग्जांपल इसको मैंने अगर, ये इसकी ट्रांसपोज्ड फॉर्म है, ठीक है, ये इसकी ट्रांसपोज्ड फॉर्म है, और ये दोनों जो है इक्वल हैं ऑप्टिकली, ठीक है, ये इसकी ट्रांसपोज्ड फॉर्म है। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, अगर पेशेंट ये वाली ग्लासेस लगाए या ये लगाए, दोनों में कोई फर्क नहीं होगा, उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा चेंजेस में। बस कुछ होता है कि कुछ पेशेंट जो होते हैं वो माइनस सिलेंडर ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं एज कम्पेयर टू द +1, तो फिर ऐसे पेशेंट्स के लिए हम माइनस सिलेंडर को की फॉर्म लाने के लिए ट्रांसपोज कर देते हैं, या जो वो ज्यादा अप्रिशिएट करे उसके लिए। तो हम आगे जाके ट्रांसपोजिशन के यूजेज हैं डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले अभी हम देख रहे हैं कि ट्रांसपोजिशन क्या होती है। तो वो कहते हैं कि कन्वर्जन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन विद सिलेंडर, सिलेंडर की प्रिस्क्रिप्शन को चेंज कर देना उसके ऑप्टिकली इक्विवेलेंट फॉर्म में, वो हमारे पास होता है ट्रांसपोजिशन। अब हम आगे देख लेते हैं। ओके, सो नाउ इट इज कंप्राइज्ड ऑफ टू वर्ड्स, ट्रांस एंड पोजीशन। ट्रांस का मतलब है ट्रांसफर करना, ठीक है, और पोजीशन यानी एक पोजीशन को चेंज कर देना या ट्रांसफर कर देना एक फॉर्म से दूसरी पे। अब हमारे पास आ जाता है ये, बिकॉज हम अभी जो है स्फेरिकल सिंपल ट्रांसपोजिशन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, ना कि हम टॉरिक कर रहे हैं, बिकॉज ट्रांसपोजिशन की बहुत सी टाइप्स होती हैं। तो सबसे पहली टाइप है सिंपल ट्रांसपोजिशन। So simple transposition is obtained by following 3 steps. जो पहला स्टेप है वो है for new spherical, हम क्या करते हैं, algebraic sum of sphere and cylindrical number। जो हमारे पास sphere है उसको इसमें हमारे पास है algebraic sum of spherical and cylindrical number, sphere plus cylinder, हम इसको algebraically ऐड कर देते हैं। फिर हमारे पास क्या है, for new cylinder you have to change the sign of the cylindrical number, whatever the prescription is, just you have to change the sign of the cylindrical number. And the third step is for new axis you just have to rotate the axis through 90 degrees. Now what does this mean, we'll just discuss it in the next slide, but we'll tell you shortly that if you have a 90-degree axis, for example, in the first prescription, if you are going to rotate, it means that you just have to rotate it by 90 or through 90. It means that axis will be 180 degree, because यहाँ पे लिखा हुआ है rotate the axis through 90, तो ये अगर prescription पे 90 लिखा हुआ है तो आपने इसको 90 से rotate कर देना है। कैसे, 90 plus 90, तो ये हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्रीज। दिस इज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट। अब हमारे पास आ जाता है रोटेशन ऑफ द एक्सिस। अब हम वही बात है, इफ द एक्सिस इज गिवन इन अ गिवन प्रिस्क्रिप्शन इज 90 डिग्री और बिलो 90, अगर तो एक्सिस की प्रिस्क्रिप्शन 90 या फिर 90 से कम है, तो यू जस्ट गोइंग टू ओके, अगर तो एक्सिस की प्रिस्क्रिप्शन में जो एक्सिस है वो 90 डिग्री है, या फिर आई एम सॉरी 90 और बिलो 90 है, तो आपने न्यू एक्सिस किस तरह से बनाना है, न्यू एक्सिस इक्वल्स टू गिवन एक्सिस प्लस 90 डिग्री, जो प्रिस्क्रिप्शन में एक्सिस होगा वो प्लस 90 डिग्री। और वो किस केस में है, अगर तो आपकी प्रिस्क्रिप्शन में 90 या 90 से कम है, ठीक है, 90 इक्वल है, 90 डिग्री इक्वल या फिर 90 से कम है। और अगर तो आपके पास गिवन प्रिस्क्रिप्शन, कोई ऐसी प्रिस्क्रिप्शन जिसमें 180 एक्सिस है या फिर 90 से अबव है, फॉर एग्जांपल 90 अबव
या फिर वो हमारे पास 180 डिग्री है, 180 डिग्री, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो है न्यू एक्सिस इक्वल्स टू गिवन एक्सिस माइनस 90 डिग्री। ये हमारे पास रोटेशन ऑफ एक्सिस का प्रोटोकॉल है। सेकेंडली हमारे पास अब आ जाती है एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, a patient comes to you with a prescription of +3, this is the spherical power, +2 is the cylindrical power, or 90 degree is the axis of this prescription। तो हमने पढ़ा सिंपल ट्रांसपोजिशन के 3 स्टेप्स हैं न्यू स्फीयर फाइंड करने के लिए, सिलेंडर प्लस स्फीयर, so sphere plus cylinder, it is an algebraic sum, so plus plus plus, so it's +5. For the new cylinder, just change the axis of the, sign of the cylindrical value, so it's -2. I just have noted over here, it is over here, it is +5 new sphere, -2 new cylinder. Now rotate the axis. Over here axis is 90 degree, so rotating axis means we have read the protocol. If it's 90 or below 90, just add 90 degrees. So over here we have just did the same, 90 plus 90 equals to 180 degree. So this is the transposed form of this prescription. It is the transposed form. Second example is, if a patient comes to you with a prescription -2, this is the spherical value, +1 is the cylindrical value, and 70 degree is the axis. So we have already discussed what are the protocols to do the transposition of a given prescription. Just add algebraic sum of sphere and cylinder. So we did the same over here, -2 plus 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 minus plus minus, so it will be -1 spherical value. New sphere is -1. We have a plus sign over here for the cylindrical value. We changed it into the -1 because the second step was change the sign of the cylinder. New axis is 70 degree. If it is 90 or below 90, it was below 90. So we just did it. It was below 90 degree. So we just add 90 degree. So it will be 160 degree. And this is the transposed form of this prescription. And they are optically same. There will be no effect if you give the patient this, either of these two prescriptions. Next we have example 3. It is +3 sphere, -2 cylinder, and axis is 180 degree. It is obvious that the axis is above 90, it is basically 180 degrees. So we have read the rotation rule that if the axis is 180 or above 90, you just have to subtract 90 degree, right? So the first step is, this was the cylinder. The first step is just add the algebraic sum of sphere and cylinder. It will be, my pen is just irritating me. Okay. Okay. So just algebraic sum of sphere and cylinder is the new sphere, so it will be +1. The new sphere is +1. For the cylinder, new cylinder, just change the sign of the old prescription's cylindrical value, so it is +2. And axis is 180 degrees, just subtract 90 over here. So we just got
90 degree. This is the new axis. It's an optically equivalent form of this prescription, right? This one is the optically equivalent form of the above prescription. Got it? So next example is +5 sapphire. This is the cylinder. Sapphire cylinder. It is the sapphire, and axis is minus 120. It is above 90, right? Is above 90, so you just have to, if above 90, we got the rule that subtract 90, right? So over here, it's irritating. So sapphire was +5, subtract, add it with -2, add algebraic sum, right? So it's +3 new sapphire, it's change the sign of the cylinder, and if axis is above 90, just subtract 90, so it's 30 degree, which is the optically equivalent form of the given prescription. So just got a form over here. It is a prescription. Spherical power is -1, cylindrical power is +1, axis is 90 degrees, so its transposed form will be no spherical value. It will be just minus cylindrical value with the axis of 180 degree. This prescription is for those people who have difficulty to wear two powers, like they have to wear -1 sapphire +1 cylinder at the axis of 90 degrees. Can you simply use only the cylindrical power of -1. It will be easy for them to carry. Now we have a case history. A patient comes to your clinic with visibility distress story. She says that 6 months back her spectacle changed, but now she still finds her vision blurry. And she has consulted to another optometrist and her prescription changed. Both the new and old prescriptions were with her. She asked that how can a prescription change so much in 6 months, especially when the patient had only a minor blurring of the vision. The patient says that she does not believe in the new prescription and she wanted to check her eyesight again. We are just going to discuss the importance of transposition in this case history. There's a patient who is saying that after 6 months, her new prescription got a lot of number. So she's saying that how can a VN be so changed after just 6 months, because patient is having just a minor blurring of the VN. So instead of wasting your time for checking again, just you should go through the prescription. You should compare the old and the new prescription. You can see over here, the old prescription states that, let me change the color. Old prescription says that the sapphire value is -3, cylindrical value is 0.5 in the right eye with the axis 180, and the left one says -3 left eye sapphire minus 0.5 cylinder at the axis 180, and the new prescription states that -4 is the spherical and +1 is the new cylindrical for this both the eyes. So it's just like a -1 difference, -1 diopter difference over here, and it is over here, it's the -0.5 diopter difference. Minus +1. Okay. Over here, it's just 0.5 diopter difference. We just read over here. New prescription is -4 +1 into 90 degree. We just have transposed it. Like add both of them. You got -3 sapphire. You just have changed the sign of the cylinder, -1 cylinder.
and access is 180. So you are just going to, now this is the transposed form of the new prescription she got, right? So we'll just see in the next thing. New prescription is -1 cylinder, and all the things are same, only the cylindrical values are changed. It is having 0.5 difference. So you just need to tell her that her vision is okay. She don't have to get panic, because only the change in the VN is 0.5 after 6 months. That was a transpose form, so she got panicked that how can it be changed. So from this we can just have an idea of the importance of transposition. Instead of wasting your time to check the real acuity of the patient again, you just can understand the prescription of by transposing it and checking that is there any difference. If there is, just tell the patient that it's okay, there is no something to get panic, or there's no need to get worried about your vision, and the other patient doctor has checked your vision correctly. So what is the importance of transposition? To compare the present diffraction with the previous prescription, right? We like the same we did before in the back case history, to keep lenses as light as possible, because if you'll just have high spherical or high cylindrical value, patient can get astenopic symptoms, because contact lenses and refractive surgeries use minus cylinder. I already told you that there are a lot of patients who uh, are comfortable with minus cylinder, and there is also a case that contact lenses and refractive surgeries use mostly minus cylinder. So if a patient with prescription of plus cylinder, you can just transpose it into the minus and can ask him to try that other glasses. Therefore, it is necessary to be familiar with both forms and to know how to convert it from one into the other. So it's important to know that how to transport from one prescription to another. Any questions? If you have any kind of questions, just write it in the comment section and will available for you, and will definitely answer. Thank you.